Assalamu alaikum. So finally we're on to our last topic of the chapter pressure, which is a manometer. Okay, or specifically a U-tube manometer. Okay, so let's start by seeing what it actually looks like. Okay, let me upload an image of it. Let's take a look at this. अभी फिलहाल सिर्फ इस चीज़ की बात करते हैं. So basically, a YouTube manometer is a device that uses is a device is a device that actually compares the difference in pressure of two sources. ठीक है, two gas sources basically. यहाँ पर equation कर रहा है two gas sources. ठीक है, so it basically compares two sources of gas which are creating a pressure और उनको compare करके देखता है कि ये इनमें से कौन सा ज़्यादा है और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है. ठीक है, so basically by the diagram you can easily see that there are two openings in a U-tube manometer, and inside that U-tube manometer there is a liquid. That liquid can be anything. It can be water, it can be oil, or it can be mercury. होता कुछ यूँ है कि the water, as you know, the pressure in any liquid rather depends on the height of the liquid column. ठीक है, तो when there is nothing, no input from either side, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है, they're both open on the to the air. The height here would be equal to the height here. Therefore, the pressure on both the arms of the U-tube manometer would be the same. ठीक है, height same है. And you know the liquid column, the pressure is rho g h. ठीक है, liquid same है इसलिए gravity same है क्योंकि sorry, liquid same है तो density same है, जगह same है तो gravity same है, और it all depends on the height. तो अभी फिलहाल height भी same है, so therefore the pressure itself is same on the both arms. Okay, so right now let's suppose this P1 is exposed to the air and P2 is also exposed to the air. जो left side पे air pressure पड़ रहा है, that is obviously equal to the right side. Therefore the level of the liquid is the same. ठीक है, now if something happens like मैं किसी भी एक source को connect कर देता हूँ. Let's take a look at this point. मैं इस source को connect कर रहा हूँ किसी भी एक gas source से. ठीक है, मैंने इसको यहाँ से किसी भी gas source, let's suppose S, उसका pressure यहाँ apply कर दिया. Now you can clearly see that the pressure of the gas source A is actually higher than the pressure of the air A. ठीक है, क्योंकि गैस का सोर्स हाई था, it actually pushed the liquid down a bit, और एयर प्रेशर कम था, therefore liquid यहाँ से rise कर गया. ठीक है, so the pressure due to S is actually greater than the pressure due to A, the air pressure. ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है? We have now figured out कि गैस का जो सोर्स है हमारी, उसका प्रेशर ज़्यादा तो है, बट कितना ज़्यादा है? Usually there is a scale present here, यहाँ पर, और ये scale, this scale actually gives you the difference in the air pressure. So we could mark this height here and this level here. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो difference होगा, we could mark it as h. So h is actually the pressure difference. It is important to note
कि H is not the pressure of the gas source S. It is actually the difference between the pressure of the gas source S and the gas source A or the air pressure. ठीक है, तो H is actually telling you the pressure of S minus the pressure of A. ठीक है, यहाँ पर ये बहुत important बात है. If you understand it, it's really good for you. वरना मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. The difference in height is actually telling you कि गैस प्रेशर S जो था, जो सोर्स का प्रेशर था, वो एयर प्रेशर से कितना ज़्यादा है. कितना है ये नहीं देख रहे हम, कितना ज़्यादा है. एंड अगेन बैरोमीटर की तरह this pressure can be told in two ways. H can be actually millimeters of mercury, Hg, and हम ये बोल सकते हैं कि the pressure of source S is like 30 mm above air pressure. ठीक है, या फिर above anything else अगर यहाँ पे कोई और सी सोर्स अप्लाई हुई होती. खैर, the proper way in which we can actually tell the pressure difference is through the formula rho g h. अब इसमें आपको एक प्रेशर का इस लिक्विड का डेंसिटी बताई जाएगी. ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होती है 10 है, और हाइट आप ये वाली ले सकते हो. ठीक है, बट दिस हैज़ टू बी इन मीटर्स, राइट. ये मीटर्स में होनी चाहिए. तो द प्रेशर वुड कम आउट इन न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स. ठीक है, नाउ वी हैव कंसिडर्ड द एग्जांपल इन विच द सोर्स इज एक्चुअली ग्रेटर. अब अगर आप तीसरी एग्जांपल को गौर करो, द थर्ड एग्जांपल here in which if we consider this air pressure and we consider this pressure of the source, so we could see that the air pressure is clearly greater than the pressure of the source. इसीलिए एयर प्रेशर ने जो लिक्विड का कॉलम है उसको पुश कर दिया है डाउनवर्ड्स, एंड द लिक्विड राइजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. So we could clearly see in example 3 that the pressure of the source is actually less than the pressure of air. ठीक है, so the height in this case, this height is not from the center, this height is from the upper meniscus to the lower meniscus. ठीक है, so this height h will tell you pressure of air minus pressure of source. ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार प्रेशर ऑफ द एयर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सोर्स. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ दिस प्रेशर कैन बी टोल्ड लाइक दिस कि 30 mm. अब यहाँ पे बिलो एयर प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, सोर्स का प्रेशर तो कम था ना, तो ये बिलो एयर प्रेशर हो गया. और अगर प्रॉपर तरीके से बताना हो तो वी कुड टेल इट लाइक कि लिक्विड की डेंसिटी, ग्रेविटी और ये जो हाइट आई है आपके पास, इसको हम मल्टीप्लाई करके प्रेशर मालूम कर सकते हैं कि हवा का प्रेशर सोर्स के प्रेशर से कितना ज़्यादा है. अगेन आई टेल यू दिस कि दिस डज नॉट टेल यू द प्रेशर ऑफ द एयर इटसेल्फ. ये सिर्फ ये बताता है कि सोर्स से हवा का प्रेशर कितना ज़्यादा था. एग्जाम्पल 2 में बता रहे थे कि सोर्स का प्रेशर हवा के प्रेशर से कितना ज़्यादा था. ये उस जगह का प्रेशर नहीं बताता, ये सिर्फ डिफरेंस बताता है. ठीक है, सो आई थिंक यू आर रेडी टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. हम चैप्टर यहीं एंड कर देते हैं. ट्राई टू डू देम एज सून एज पॉसिबल एंड गेट बैक टू मी. ऑलराइट.